Hi everyone, I hope you're doing good and I pray that you keep yourself physically and mentally fit. आने वाले कुछ दिनों के बाद आप में से कई लोग परीक्षा लिखने वाले हैं और आप में से कई लोग इस परीक्षा के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे एंड फाइनली वी हैव आवर टाइम टू शो व्हाट वी प्रिपेयर्ड फॉर दीज many डेज और कई लोग कई सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं सो ऑब्वियसली इट रियली मैटर्स अ लॉट फॉर यू ऑल। कई लोगों के लिए ये उनका आखिरी मौका रहेगा एंड many people are going through a lot of challenges especially we cannot compare people। हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते हैं किसी की भी, क्योंकि सबका सिचुएशन अलग होता है। कोई फाइनेंशियली वीक होता है, कोई मेंटली डिस्टर्ब रहता है, कोई फिज़िकली वीक होता है, किसी के घर पे इश्यूज होते हैं, किसी घर पे कोई बीमार रहता है। तो कई सारी परेशानियों को झेलने के बाद, देखने के बाद आप अपनी तैयारी करते हैं and really appreciate people doing so with all these problems with you. I really appreciate and I really learn from you all that we should never give up. I really thank you for teaching me and teaching many others that we should not we should never give up until we achieve what we really need in our life. जैसे आप सब परीक्षा लिखने वाले हैं तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है इतने समय से जो मैंने परीक्षा लिखी है वो आपके सामने रखूं। Not as an advice, because I know that people do not like advices these days, but as a suggestion, or maybe the mistakes that I made. I don't want you to make the same mistakes, because it is said that your last mistake is your best teacher. So किसी की गलतियाँ अगर आप समझते हो और देखते हो और सीखते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सीखते हो दूसरों की गलतियों से और उसे अपनी ज़िंदगी में ना होते हुए उसे सुधारते हुए ज़िंदगी को आगे लेके जाते हो, देन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। सो आई एम हियर टू गिव अ फ्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ एंड द टाइम दैट आई गेव माई एग्जाम्स। तो इस वक्त सिचुएशन किस प्रकार है, जस्ट काइंड ऑफ एक दृष्टांत के रूप में आपको सुनाऊंगा कि मान के चलते हैं कि हम तितलियों के पीछे भाग रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारी तितलियां हैं और उनके पीछे हम भाग रहे हैं। तो हम उनको भगा रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पकड़ नहीं पा रहे। दे आर फ्लाइंग टू हाई, वी आर नॉट एबल टू कैच दम। बट यदि हम उस स्थान पर स्थिर रहें, वी स्टैंड स्टिल एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, हम देख सकते हैं कि तितलियां हमारे ऊपर आके बैठने लगती हैं धीरे धीरे करके। तो सिचुएशन आज का हमारा ऐसी है। बहुत समय से हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस किताब के पीछे दौड़ रहे हैं, उस किताब के पीछे दौड़ रहे हैं, उस क्लासेस पे जा रहे हैं, ये क्लासेस पे जा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वी आर डूइंग क्लासेस हियर एंड दैट, सब हो रहा है। तो वैसे में वी आर नॉट स्टिल एट दिस वेरी पोजीशन। बहुत लंबे समय से पढ़ने वालों का भी यही हाल है। डर है, बेचैनी है, चिंता कर रहे हैं। ये ज़रूरी है, पार्ट ऑफ लाइफ। ऑब्वियस बात है कि अगर आपकी जगह पर मैं परीक्षा देता तो मैं भी इसी सिचुएशन से गुज़रता। शायद नहीं, बट 100% कह सकता हूँ कि मैं भी इसी सिचुएशन से गुज़रता। लेकिन यू नो हैविंग ऑल दी सिचुएशंस, कैन दी सिचुएशंस ईल्ड एज अ रिजल्ट? क्या ये सिचुएशंस हमें कोई अच्छा रिजल्ट दे पाएंगी? और मैं समझता हूँ नहीं दे सकते हैं। तो इस वक्त आपको करना क्या है? देखिए, नथिंग न्यू। क्योंकि यदि आप सालों से अपने आप को तैयार कर रहे हो, सिंसियरली, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर ईयर्स और मंथ्स, सो आप फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स की बात करें तो यू हैव फ्यू 14 to 15 और 16 चैप्टर्स मे बी, एंड यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, एंड आपने नियर अबाउट 11 to 12 चैप्टर्स को अगर आपने, या 10 चैप्टर्स को अगर आपने एक दो बार या तीन बार आपने प्रैक्टिस किया है, तो आप डर क्यों रहे हो इस वक्त? You have done your practice, right? You have done your best. So why is that fear? Because you're seeing the number of candidates applying for the exams, or maybe it may be your last chance of appearing for your exams. कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है ये पॉसिबल है, सो इसीलिए आप डर रहे हो, राइट? सो अगर आप इस डर को रखोगे तो आई डोंट गेस दैट यू नो इवन आफ्टर स्टडिंग फॉर ईयर्स यू विल बी एबल टू क्लियर एग्जाम्स। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको केवल रिवाइज करना है इस वक्त। जो आपने पढ़ा है उसी में से कोई एक सवाल आएगा, सेम सवाल नहीं तो कम से कम पैटर्न सेम रहेगा, नंबर्स अलग रहेंगे, राइट? सो there's nothing to worry much. You have to revise for the next 2 weeks that you have. Keep on revising. That is really important.
स्पेशली कई बार ये देखने को मिला है कि जब भी कोई भी इंस्टीट्यूट टेस्ट रखता है, मैंने कई सारे बच्चों से बात की है, कई सारे इंस्टीट्यूट्स वो जाते हैं। सो जब भी बात करते हैं तो कई सारे बच्चे बोलते हैं ना, हमें डर लगता है टेस्ट देने में। अब you're not kids anymore, you're not in schools anymore that you feel fear. This is for your life. So the more you give your test, that makes you a better that makes you a better person. You can go on through a lot of barriers in life. So टेस्ट देना रियली इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है, वो आपको एक तरीका बताता है कि कैसे अपने आप को तैयार रखें, किस सेक्शन से शुरू करें, कैसे अपने आप को मेंटली फिट रखें, अगर आंसर्स नहीं आते हैं तो हाउ टू मूव ऑन। लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी लर्नड इफ़ यू कीप ऑन राइटिंग योर टेस्ट। मॉक टेस्ट देते हैं या फिर इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट होता है वो दें। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू गो फॉर अ टेस्ट, especially those who are learning for, studying for a long time. You need to go, because you do not go, that is really important. That is when the people who come behind you, they overtake you. कभी कोई आपको they do not overtake you actually, देखा जाए तो, because you stopped, they move ahead. That is the thing that happens. Clear? सो इस चीज़ पे ध्यान दें कि आप अपने आप को फोकस करें और जो आपने पढ़ा है उस चीज़ को आप फिर से रिवाइज करें, ताकि दैट उसमें से कोई भी सवाल पूछ ले तो आप उसका जवाब ज़रूर दे पाए। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड, डू नॉट बिकम अ बर्डन फॉर योर सेल्फ। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. I really ask the parents, especially parents and friends of स्टूडेंट्स जो गोना अपीयर फॉर द एग्जाम्स, प्लीज़ आप उनको मोटिवेट करिए। कई बार देखने को मिला है कि इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग यू डीमोटिवेट देम, दैट इज़ रियली बैड. सो कीप ऑन मोटिवेटिंग देम, बिकॉज स्पेशली फ्रेंड्स एंड ऑल, अगर आप मोटिवेट करते हो अपने दोस्तों को ना, सो दैट विल बी रियली अ मिराकुलस थिंग फॉर योर लाइफ. दैट विल बी रियली अ मिराकुलस थिंग दैट चेंजेस द होल फेस ऑफ लाइफ. सो दोस्तों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. सो friends, I request you all to motivate your friends who are going to appear for the exams. Keep on motivating them, and parents also, because कई सारे issues आते हैं इस टाइम पे, जैसे कि relatives वगैरह होते हैं या फिर जो लोग बगल रहते हैं. कई सारे लोग ऐसे होते हैं, they do not care for their family and something, but they always have a problem with you. फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़कों का अगर उम्र 27-28 होता है, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक अब तक नौकरी नहीं मिली है. जब भी देखते हैं कि क्लासेस जाते हैं लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली है, ऑब्वियस बात है, दे मे गो फॉर द क्लासेस, बट रिक्रूटमेंट निकलना है, दे हैव टू अप्लाई फॉर इट, देन दे हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम. सो लॉट ऑफ प्रोसेस हैज़ टू गो ऑन. सो यू जस्ट कांट से कि क्लास करते थे तो नहीं, अभी तक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है. सो that is also a concern for girls. They have gone through an age of say 24-25, they're not married. Again, that is an issue ki girls are not married, they need to get married, so and so ऐसे करके कई सारे barriers, not exactly barriers, but there are few things that keeps on moving here and there. So ये सब को अगर you have to overcome, then there needs to be a support, especially from parent side, कि आप अपने बच्चों को, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड्स, यू नीड टू सपोर्ट देम एट दिस वेरी सो दैट दे कैन प्रूव देम सेल्फ. बिकॉज अगर आप उनको पढ़ा रहे हो, इतने समय से आप उनको पढ़ा रहे हो, उनको ग्रेजुएट कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, सो लेट देम यूटिलाइज दैट. दे शुड, इट इज़ नॉट लेट देम, दे शुड यूटिलाइज दैट. तो या तो फिर आप पढ़ाई ही मत उनको. जब आप पढ़ा रहे हो, सो दैट शुड गिव सम result, right? So we are in a state where we are talking about equality, and we need to see equal hands, equal shoulders walking together. It is obvious we cannot, for example, अब आप 5 लीटर का तेल लेने जाइएगा, it is more than 1,000 rupees, right? So a single person earning and looking after 4 people of a family, it is really difficult for the coming days. It will be really difficult. So 2 people earning in a family would be really helpful. So both have to earn. So for that they need to appear for such exams, and for that they need support. So parents and friends, please do support the people who are gonna give the exams. And I really feel so proud and happy when I see married women and all, they come for the classes to various institutions. When I move by and I see them coming, so I really appreciate the in-laws and all. And I'm really thankful to those people who help their when they come in as their girls and as their boys. You really help them. This is really good to see.
and this really means that the society is moving on in a good path. अच्छा लगता है देखते कि हम we are giving equal opportunities to both boys and girls, so that is really appreciated. And especially in the in-laws, right, I really thank you all, especially the husbands, the mother-in-laws, the father-in-laws, the the other people at the house, and even for the other gender, like unke ghar pe bhi. So this is really appreciated. I really thank you all. But at this very moment, do hafta baki hai. So at this very moment, they need more support from you, with respect to the work that they do, and so you can help them again as you have been doing. But for these 2 weeks, give them some more time so that they can prepare well, and that is really important. Uh, I really appreciate that, and I want you to please help them so they can be helpful for themselves in the coming days, and they can take care of you and the rest of the family, and they can also be self-dependent for themselves in the coming days also. So वो भी करें. And institutions and private and public sectors, both institutions, whoever is watching me talking, if you find the candidates like they have been applying for these exams, they have applied for these exams, and you find them having that caliber, that enthusiasm or that knowledge कि अगर वो एग्ज़ाम्स देते हैं so they will clear this exam, so I request you all to give them some leave or something kind of thing, maybe half day. That will be really beneficial for them. Maybe after the lunch they can take off so that they can prepare themselves, or maybe full day if possible, or else at least half day. That will be really beneficial for them. So your help will be really really appreciated on a humanitarian ground, उनके लिए भी और उनके परिवार के लिए भी. And they can really come up with something. So institutions से भी request यही रहेगा कि if possible give them that window of say 2 weeks to prepare themselves for the coming days. And sincerely you need to prepare. Everyone who's preparing, sincerely prepare yourself and wholeheartedly, and keep yourself away from those people who always have that negative tendency of always speaking of नहीं होगा, इतने सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं and you think you can crack this. Please stay away from such people. These people themselves cannot try for something, and they always have this taunting habit of disturbing people and dragging you towards them. So try to be away from such people, the lazy and the ill-minded people. इनसे आप हमेशा अपने आप को दूर रखें. तो this will be really beneficial for you. And prepare yourself. Self study is important. आप अपने आप को तैयार रखें. You may be going to various institutions, like I see a lot of institutions in the island, so a lot of you may be going to a lot of institutions. That is well and good, because you need to कई सारे चीज़ हम नया सीखते हैं वहाँ जाके. And all the institutions, I hope they all teach their best. They give their best so that the students come out in flying colors. So nothing with the institutions, they all do well in the islands, I hope so. But again, the thing is that you need to come back home and you do your self study. That is really important, because self study के बिना केवल classes जाने से वो 1 घंटा या 2 घंटे में you cannot do anything. So that is important that you come back home and you do your self study. Clear? So if you follow these few things in your life in the coming days, that will be really helpful. And you're appearing, and if you do not get through, don't break yourself out there. You have a lot of chances in the coming near future कि आप अगले 1-1.5 साल में you will have a lot of vacancies. So you can fill it up and you can succeed. So your preparation is important, कि आप कितने समय के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब भी लोग प्रिपेयर करते हैं तो दे कम एट दी एंड, लास्ट मोमेंट में आते हैं. कई सारे इंस्टीट्यूशंस में क्रैश कोर्स शुरू होता है, तो पीपल ज्वाइन एट दैट वेरी मोमेंट, लाइक crash course and etc. and all, for those people who have already done their studies for years, and they are there for their revision. Because you cannot expect some teachings of 1 year or 2 years together to be summed up in 45 days or odd, and that is not possible. So this is to sharpen your mind, that's it. So if you are late for
this particular exam, so make sure that you prepare yourself for the coming days. लास्ट टाइम में ज्वाइन नहीं करना कभी भी, कहीं में भी, अगर आप करते भी हैं तो कुछ समय लीजिए अपने आप को, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, तो उस कमज़ोरियों को ठीक करने में कुछ समय लगता है। ऐसी नहीं कि एक रात में आप अपनी कमज़ोरी ठीक कर दें, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। So give yourself some time, and for that you need to at least regular yourself for your institution wherever you are. So वो भी आप थोड़ा ध्यान दें, and prepare yourself well. And those who believe in spiritual paths, spend some time in that spiritual path that you believe in for around say 15 to 20 minutes in a day, and that really brings in a new new light, new waves of energy, that we say good vibes. It comes in automatically. I have felt that, and I really believe that you will also feel if you follow that. And if you're not that much interested in the spiritual life or the spiritual part of life, you may have people around you, for example your parents, brothers, sisters, cousins, your friends, or your husband, your wife, your kids. So you may like these people a lot in your life. They have a lot of importance in their life. So you can just think of them, yeah, okay, fine, if I get through this exam, so that I can support them and also support myself in the coming days and be self independent. So अगर आप ऐसे भी या फिर वैसे भी, whichever way you like the best you can do so, go through this, and give yourself some time, speak to yourself, and that is really important. Speaking to yourself is really important. I always do that, and I do that almost every day. I speak to myself whatever I've done the whole day, and what should I have done. Should I have been controlled my anger at that very moment, instead of barging and shouting at someone. So I try to keep on improvising myself. So I really hope that you all also follow to improvise yourself and make yourself better. So if you think whatever I've said in this video of mine was helpful for you, I really thank you that you felt it helpful. And if you feel it is really helpful for you, you can forward it to people so that it can be helpful for them. And if you have any doubt with respect to how to prepare yourself in the coming days, you can comment me in this comment section, or you can WhatsApp me in the numbers, in my phone number that have been given out there. You can text me in WhatsApp, and I'll give you the reply to it whenever free, whenever it is possible for me to do so. Prepare yourself well. Smart work is important. Do not pressurize yourself with hard work at this very hour. Giving too much pressure to yourself, don't do that. Be smart in what you're doing. Your time is really important. Make sure that you utilize your time in a proper way. And people, please support those who are going to appear for the exams. Please support them. And you're going to appear, make yourself clear what you're going to do, how you're going to do, how you're going to start, how you're going to end. Keep yourself prepared, and going to the exams, make sure that a day before you keep your pen, your ID card, your hall ticket on the table or on the altar that you pray. So whatever it is, end of the day, the summary should be, it's very simple. Keep yourself fresh, keep yourself clean, keep yourself healthy mentally and physically, and keep yourself away from those people who are negative and who have that negative waves, which will always disturb you. Keep yourself with positive people, and if not, keep yourself positive, away from the negative people. That is really important. I wish you all the best, and I pray for each and every individual who's going to appear for the exams, that you all clear up. But again, this is a chance for the best that you have done, for the best who have already prepared yourself to the best, and who have prepared yourself in the very short time. आप सबके लिए मैं I'll just pray for you all, that you all really succeed in life, do the best that you can do, and with that you can help yourself, you can motivate yourself, and you can also be a symbol of hope to many others in the coming days of life. I hope my words are clear, and I wish you all the best. God bless you. Take care, everyone.